समर्पित करेंगे। और उससे पहले हम ये दृश्य इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया है पूरी वैदिक परंपरा के साथ। To the nation the statue of equality in a short while from now. Ahead of that, he is participating in a puja ceremony being held at the ashram, and this statue of equality that he will be dedicating to the nation in a short while from now is a 216 feet high statue that has been constructed in the memory of the 11th century saint Sri Ramanujacharya of the Bhakti Marg. Sant Sri Ramanujacharya promoted the idea of equality in all aspects of living, including faith, caste and creed. And he worked tirelessly for the upliftment of people with the spirit of every human being equal, regardless of nationality, gender, race, caste or creed. And you can see Prime Minister Narendra Modi there participating in the puja ceremony ahead of dedicating to the nation the magnificent statue of equality of Sri Ramanujacharya. Now, just to give you a bit of information about the statue, it has been made of 5 metals: gold, silver, copper, brass and zinc, and it is one of the world's tallest metallic statues in sitting position, which the Prime Minister will be dedicating to the country in a short while from now. You can see visuals of Prime Minister Narendra Modi live in Hyderabad. He is on a day-long visit to Hyderabad, and in a short while from now he will be dedicating and inaugurating the statue of Sri Ramanujacharya, an 11th century saint, with the statue which is mounted on a 54 feet high base building called the Bhadravedi. Ahead of that, Prime Minister Narendra Modi participating in a puja ceremony there in the ashram. Now, the inauguration of this statue, which Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating in a short while from now, is a part of the 12-day Sri Ramanuja Sahasrabdi Samaroham, which is the ongoing 1000th birth anniversary celebrations of the Bhakti saint Sri Ramanujacharya. Back in 11th century, it is said that Sri Ramanujacharya interpreted and gave the exact meaning of the Vedas to the common people to understand and implement in their lives. Ramanujayar Swami Sri Jarananam Mangaladhasanapurvakam Visvasantyartham Sarvamaya Acharya Seva Kainkarya Rupena Sankalpita Ashtottara Sata Divya Desa Pratishtha Prayukta Srimad Bhagavad Ramanuja Swarnamurti Pratishtha Purvaka Srimad Bhagavad Ramanuja Samata Murti Spurti Kendra Subharambha Mahotsava Prayukta Panchatrim Satyuttara Sahasra Gundahatmaka Sri Lakshmi Narayana Yaga Karamani Asya Yajamano Yajamanasya Kasya Bhagotrodbhavasya Anuradha Rakshadre Vrishchikaraso Jatasya Narendra Damodar Das Modi Namadheyasya Sahakudumbhasya Ja Kshemasthirya Dhairya Virya Vijaya Bhaya Arogya Aishwarya Dharadhanya Putra Bhutra Bhyurjyadham Samasta Sanmangalavapyardham Ishtakamyardha Parasiddhyardham Sarvakaryeshu Vijaya Praptyardham Sarvabhumadhikasiddhyardham Sankalpita Ekandhika Ekakundatmaka Sri Vishwakshenesh Aradhana Karma Sampurnata Siddhyardham Sakadevata Triptyardham Purna Udiho Mangarishe Om Hiranyagarbha Samavat Adapadirekasi Sadhana Prithivyam Deva Tasmai Devaya Harisham Deva
పరిక్రమ संपूर्णदाव्याति सद्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासन युद्धदन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते अनेन ध्यानं कृतोमेन भगवान् सर्वात्मकः अन्यथा श्रीमन्नारायण प्रीयताम् इत्यक्षतोदनं विसृजेत् आसनाद्यन्तपूर्णान्तं हवनं यन्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनमभक्तिकं तत्सर्वं क्षम्यतां देवदीनं मामात्मसात् कुरु सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु साष्टांगं प्रणम्य प्रवरमुच्चरेत् तप्रावेश्य हृत्पद्मगतं ध्यात्वा हृस्तं भगवन्तं महाकुम्भे आवाहयेत् आवाहनादि षण्मुद्राः प्रदर्शयेत्
परिस्तरण देवानुद्वासयेत् संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः वृद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः उभयकुशान् सर्वानस्तेनादायास्तयुगेन उत्तराग्राणे बन्धयित्वा ओङ्कारं समुदीरयन् आज्यपात्रे मूलान् स्रवगर्ते मध्यान् सृजग्रान् यथाविधिक्रमेण त्रिस्पर्शयित्वा विश्वरूप्यां जुहुयात् ओम स्वाहा परिधिदेवानुद्वासयेत् ओम श्रीधराय नमः यज्ञवाय नमः नृसिंहाय नमः यथास्थानमुद्वासयामि दक्षिणोत्तर परिधिं मध्यम परिधिं प्रमेण उपस्पृशन् ओंकारं समुदीरयन् परिधित्रयं जुहुयात् आघार समिदौ च उद्वासयेत् प्रणीतां प्रादक्षिण्यनात्मनोऽग्रे विन्यस्यादत्रस्थं वासुदेवम् उद्वास्य प्रोक्षणीजमादाय सेचयेत् प्रणीताजले ओम प्राच्यान्दिश वासुदेवमार्जयेतात् दक्षिणस्यान्दिश सङ्कर्षणोमार्जयेतात् प्रतीच्यान्दिश प्रद्युम्नोमार्जयेतात् उदीच्यान्दिश रुद्धोमार्जयेतात् ऊर्ध्वायान्दिश गदाधरो महापुरुषो मार्जयेतात् ब्रह्माणमुद्वासयेदोऽङ्गं ब्रह्मणे नमः यथास्थानमुद्वासय ओम याते अग्ने अग्नियातनोऽस्ते ह्यारो आत्मात्मानम् अच्छापसो निगुण्मन्नस्मै निर्यापुरोणि यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीदस्वायोनिं जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय एहि क्षत्रवृद्धवृष्णीयं दुष्टभोजस्सुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन चकरेण रक्षा तासाग्निना शान्ता सा मे शान्ता सुजगुं समयते अंतरिक्षगुं शान्तं तद्वाजुना शान्तं तन्मे शान्तगुं सुगुं समयते शान्ति शान्ति शान्तिः बृहत्सामक्षत्रवृद्धवृष्णीं दृष्टभोजस्सुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन सगरेण रक्षा भगवन्तं प्रार्थयेत् ओम बृहत्सामक्षत्रवृद्धवृष्णीं दृष्टभोजस्सुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन सगरेण रक्षा भक्तायदग्नो विहितं यथा चक्रियताविधि आराधनं तवैवेदं गृहाण पुरुषोत्तमा भूमोस्खलितपादानां भूमिरेवामलम्बरं त्वयि विप्रतिपन्नानां त्वमेव शरणं विभो अंजलिस्थकुसुमान् भगवत्पादमूले समर्प्य व्यस्तास्तप्रणमेत् ओम मनोहिंसी जातवेदो कामस्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्न అది పైకన మా పరిపాదయా సంభాజంచ విరాజంచ అభిశ్రీర్యాజనో గృహే लक्ष्मीरास्तस्य या मुखे तया मासकुं सृजामसि बोल विश्वक्सेन भगवान की यज्ञ भगवान की ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नेति सह मा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीच्या
यमो राजा प्रभुनाभिः पुनातुमा जातवेदामोर्जयञ्चापुन अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं आरवेश्यं भाग्यं महाराज्यमाधिपत्यभयं यशस्कारं बलवन्तं प्रभुत्वन्तमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्गीतनागास्वपतिर्नराण सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीर्वत्यस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतं जीवशरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः केतुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्याजन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇష్టిశాలలో విశ్వక్సేనే శ్రీ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఇప్పుడు మన లక్ష్మీనారాయణ సహస్రకుండాత్మక యాగ కార్యక్రమంలో మూడవ నాటి సాయంకాలపు హవన కార్యక్రమంలో నిత్య పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని మనం సంకల్పం చేసుకోవడానికి ముందుగా పంచసూక్త హవన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ఆయా ఆయా యాగశాలలో ఉండేటువంటి ఉపదృష్టలు హోతలు అంతా కూడా గమనించి పంచసూక్త హవనము, పరివార హోమము, ప్రాయశ్చిత హోమాదుల్ని జరపవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం భూస్వాహాగ్నగహిరం ఓం భవస్వాహా వాయవేదం భోగం సుభస్వాహా సూర్యాయేదం ఓం భూర్భువస్వాహా ప్రజాపతగహిరం ఓం అదిదేన్వమగ్గుస్థాః అనుదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వదేన్వమగ్గుస్థాః దేవసవితా ప్రాసాదీః ప్రాణానాయమ్యా. ఓం పూర్వోక్తయేవం గుణవేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభతిథౌ యథా సంకల్పిత హవనకర్మణి పంచసూక్త హవనం కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య. ఓం అదితేను మన్యస్వ అనుమదేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసుమ తిరుణాన్ ఋసూక్తేన సహస్రశీర్ష పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ స భూమిం విశ్వతో భృత్వా అద్య తిష్టదశాంగులగ్య స్వాహా. పురుష ఏవేదగం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉదామృతత్పస్యేషానః యదన్నేనాధిరోహతి స్వాహా. ఏతావానస్య మహిమా అతోऽధ్యాయాతుశ్చ పూరుషः పాదోऽస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతంతే విస్వాహా. త్రిపాదోర్ధౌదయేత్ పురుషः పాదోऽస్యేహ భవాత్ పునః
ततोऽभिव्यग्रामत् शासनानसने अभिस्वाहा। तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री राम नगर में सबसे पहले यज्ञशाला में प्रधानमंत्री पहुंचे। Well, Prime Minister Narendra Modi there participating in the Rudra Abhishek ceremony at the Yagyashala at Shamshabad in Hyderabad, where he will be dedicating to the nation and inaugurating the Statue of Equality in a little while. The Statue of Equality is in memory of the 11th century saint Sri Ramanujacharya. There you can see it on your screens, live visuals from Hyderabad. That is the magnificent statue that the Prime Minister will be inaugurating and dedicating to the nation in a short while from now. Sri Ramanujacharya was a saint from the 11th century. He was of the Bhakti Marg, and he promoted the idea of equality in all aspects of living, including faith, caste and creed. He also worked tirelessly for the upliftment of the people with the spirit of every human being equal, regardless of nationality, gender, race, caste and creed. Now, the inauguration of the Statue of Equality by the Prime Minister is part of the 12-day Sri Ramanuja Sahasrabdi Samaroham, which is the ongoing 1000th birth anniversary celebrations of Sri Ramanujacharya. Now, Sri Ramanujacharya is remembered as an 11th century saint who interpreted the Vedas for the common people and gave them the exact meaning that can be extracted out of the Vedas so that people can implement it in their daily lives. You can see on your screens Prime Minister Narendra Modi reaching the site where the Statue of Equality has been constructed. Now, something more about this statue. Well, it was basically conceptualized by Sri Chinnajaya Swami of the Sri Ramanujacharya Ashram, and and it has been constructed with 5 metals, making it one of the tallest metallic structures in sitting position in the world. All right, my colleague Meghna joins us from the venue where Prime Minister Narendra Modi is currently at in Hyderabad. Meghna, important inauguration by the Prime Minister in a short while from now, a very important honor that has to be given, a justified, a quite deserving honor that is being given to the 11th century saint Sri Ramanujacharya in a short while from now. Yes, a very important event today, and the visuals we just saw a short while ago were from the Yagyashala, which is situated just near the place where the Statue of Equality is located, and Prime Minister Narendra Modi performed the puja there, and from there he has come here to the place where he is going to unveil the Statue of Equality. And in the visuals also we can see that there is Swami Chinnajaya Swami is there with him, along with him, and he's showing him the place around. He was also present there while Prime Minister Narendra Modi was performing the puja. And since morning we have been showing visuals of the beautiful majestic Statue of Equality that has been built here. It's a very beautiful place, and especially in the evening it's looking as majestic as ever. And Prime Minister Narendra Modi has entered the 108 the way for the 108 temples, which are the Divya Deshams. He is just entering the premises. Now, these 108 Divya Deshams basically surround the Statue of Equality. And, if I would like to quote Ramanujacharya Swami, he has said that to alleviate the misery of others, I don't mind facing the throes of hell, and all are eligible to enter a temple. The Creator has shown no partiality, nor should we. All are equally qualified to chant the name of God, and all are equal in the eyes of God. And Prime Minister Narendra Modi is, he has reached this place, and he is actually witnessing, the 108 temples which have been built around surrounding the Statue of Equality, and he is sitting there. And what also important is that he is also going to see the place around. These are the Divya Deshams which have been built, and now these are kind of recreation of the 108 temples that Swami Ramanujacharya was inspired from. And these are identical creations
very beautifully, ornately carved temples and surrounding the Statue of Equality, very beautifully built, temples around. Each temple has a quality itself, very intricately carved, and the infrastructure very majestic. If we can see, as we can see in the visuals, for when we talk about the statue, which is going to be unveiled today by Prime Minister Narendra Modi, a very important symbol of equality. It's not just a monument; it is a symbol. And Ramanujacharya Swami's message was to shed the ego, serve all beings as service to God. Ramanujacharya Swami had said that nobody is infallible. Purity of mind and deed is of supreme importance. He did ensure equality among all castes. He shared this mantra with everybody. He also did propound a theory that one gets honor not by caste, but based on his spiritual knowledge and practice only. He had opened doors for people of all castes and irrespective of their creed. So, this is what this entire premises and this entire place has become the symbol for. And Prime Minister Narendra Modi, we can see that he is having a headphone. He is wearing a headphone which actually explains, the audio explains of the 108 different divinations that are built, which he is currently visiting, and he's seeing, a walk around all the temples. He is paying his obeisance to all these temples, going around them. So very important, visit of the Prime Minister here. And while we know that the path which has been blessed by Bhagavad Ramanuja, now Ramanuja Acharya had been given the title of Bhagavad, and his teaching and the path which he had blessed is obviously the need of the hour. Also, this unveiling of the statue is a part of the 12-day celebrations that are happening, to celebrate the teachings of Ramanujacharya. And these are very important celebrations. There are 1,035 kunds in which Sri Lakshmi Narayan Mahayajna has commenced with, and this is all part of the Sri Ramanuja Sahasrabdi Samaroh, which is taking place currently, and which is a 12-day Samaroh, the Sri Ramanuja Sahasrabdi Samaroh that is taking place. Now, this 12-day Samaroh is extremely important. There are several people who have come from far-off places also to join this Samaroh. There are different programs that take place through the entire day, and especially for these 12 days, there are going to be several programs that will be taking place. In the visuals, we can see very beautifully carved temples. We can see these are surrounding the Statue of Equality. Very important, and Prime Minister Narendra Modi is getting an audio, explanation of, all the places he is going around. So these are, very important recreations which are depicting the divinations that Ramanujacharya was inspired from. And when we talk about, the other things, there was also Iti Shala which was held yesterday. There is also at the end of the everyday puja, there is a Punahuti which is performed, which concludes the mantra of each of the Vedas and scriptures offered to God in, which is chanted at the main Yajnashala. Prime Minister Narendra Modi a short while ago was at the Yajnashala, and now he is going around the 108 temples and the recreations of the divinations. Also, when we talk about, more about Ramanujacharya Swami, we have been speaking to Chinnajira Swami about, the inspiration of this, because he is the one who had conceptualized, Chinnajira Swami had conceptualized this entire Statue of Equality and the premises around. He had, conceptualized all of this. So definitely, he told us that this is something which is of utmost importance, because the theory or the philosophy, the teachings of Ramanujacharya Swami is the need of the hour and is very relevant even to today. Ramanujacharya Swami did live for 120 years. He had made a foot journey from Kashmir to Kanchipuram for getting authentic scriptures. He traveled extensively across India, renovating, reviving, and reforming temples, established these time-tested Vedic practices,
and the glimpses of which we will definitely be seeing in these 108 deviations that surround the Statue of Equality, which Prime Minister Narendra Modi is currently going around. These are very beautifully carved places, very beautifully carved monuments that have been built here. And this Statue of Equality is not just a monument, as I said, Shreya. It's also a symbol. It's a symbol of equality. It's a symbol paying obeisance to the top bearer of Vaishnavism, to the icon of equality. He gave the philosophy, Ramanujacharya Swami gave the philosophy of equality even 1,000 years ago, and his philosophy is still relevant, very relevant today. In his 120 year of his life, he traveled across Bharat, understanding the way of life of all sections. He embraced everyone who was discarded by the society, and he did give impetus to the beautiful concept of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is one family. So definitely all the things which is required today, which is very relevant today, which is still the need of the hour, had been in his philosophy. And he was born in the year 2017 in Tamil Nadu, and he is revered worldwide as a Vedic philosopher, social reformer, and one of the most important exponents of Vaishnava tradition. Ramanujacharya's statue, which is this 216 feet tall, beautiful, majestic statue, it rests on the Bhadra Vedi, which has been built. It is about 54 feet, the Bhadra Vedi is. There are also very beautiful, things like the water fountain, which is just in front of the Statue of Equality, which is also part of the program for today. Later, a little later from now on, which will pay Abhishek to Ramanujacharya Swami, and which is a very beautiful dynamic fountain, a dancing fountain with 8 lions, 8 elephants, 8 swans, and on top of the fountain is seated in honor Ramanujacharya Swami on a lotus. So, every part of the infrastructure here around is very majestically built, very beautifully thought. And while Prime Minister Modi is going around, witnessing every beautiful, place, every beautiful corner of the premises here at the Statue of Equality, it is definitely going to, make a statement, bring several visitors here who would love to understand Ramanujacharya Swami's teaching, as well as, come here and witness the beautiful art, the temple culture, which India is known for. Right, Meghna, in the event in a short while from now, a 3D presentation on the life and teachings of Sri Ramanujacharya is also expected. Really, this amalgamation of technology with tradition is something that would attract a lot of youngsters as well, the younger generation really learning about what Sri Ramanujacharya stood for, what the Bhakti movement was, and what really our Vedas and the Bhagavad Gita espouse. No doubt, Shreya, yes, definitely. To spread the message far and wide to this generation, it is extremely important to connect with the younger generation, to connect with the people who are the future of the country, who are the future of the world for that matter. So it is definitely important to connect with them. And while we were speaking, while Doordarshan was speaking to Chinnajiyar Swamiji, Chinnajiyar Swami said that this place has been very clearly being built, thinking, keeping in mind different aspects of technology, so that a number of people can definitely understand, a number of people can definitely especially youngsters can relate to the philosophy and understand easily and interactively the philosophy of Ramanujacharya Swamiji. Besides that, when we talk about the statue, there's also a very beautiful trivia, if I can say, Shreya. The construction is based on 9 vikaras. So, which is a sort of a theory which highlights the importance of the number 9.
So the height of the statue, which is 216 feet. So this statue has a 216 feet tall statue, and if we add the numbers, it adds up to number 9. The Bhadravedi, the base of the statue is 54 feet wide, which also sums up to the number 9. There are 36 elephants, which also sums up to the number 9. There are 54 petals of lotus, which also sums up to the number 9. So it highlights the importance of the number 9. And when we also know that this statue of equality aims to provide an inspiration to the world, as well as definitely become a place for enlightenment. Now, the place where Prime Minister Narendra Modi is currently in is the meditation center, which has been built, which is in a sense the base of the Bhadravedi, which is, this place is the meditation center which is there, and Prime Minister Narendra Modi will be, in just a short while from now, will be reaching the statue. And when we actually see the Bhadravedi, where the meditation center is, where Prime Minister Narendra Modi, we just saw him a few seconds ago, with several pillars were there. This is a meditation center, and the Bhadravedi includes the meditation center. This Bhadravedi is a 54 feet high base building on which the statue is situated. And this Bhadravedi has a number of floors. Now these floors will be devoted for digital library, research center, ancient Indian texts, educational gallery, and this educational gallery will be detailing the many works of Sri Ramanujacharya Swami. And very importantly, as we were talking, Shreya, that there are the attempt to connect with philosophy to the youth using technology has been very avidly used here. Be it immersive reality, be it light and sound show, be it virtual reality, different types of concepts have been used. And later, a little more late in the evening today, Prime Minister Narendra Modi will be witnessing a very beautiful, light and sound show, which will depict the life journey and teachings of Ramanujacharya Swamiji. And Swamiji did embrace the people who were discarded by the society. So, as I told you, this is more than a monument. This is a symbol, a kind of a movement which actually aims at giving out the message to all people to come together, all people all over the world to come together in pursuit of a fairer, compassionate place to live in. Ramanujacharya Swamiji did travel across Bharat, understanding the way of life of all sections of the society. And not only that, Dr. B.R. Ambedkar had told about Ramanujacharya Swamiji. He said that he was one of those people who actually was a social reformer, who stood for the concept of equality. So, and also Swami Vivekananda had said about Ramanujacharya Swamiji that he was brilliant, his heart was great. And he opened the doors of spirituality to everyone. Right, Meghna, so for all the viewers who are joining us right now, let me just update you on Prime Minister Narendra Modi's visit to Hyderabad. That visual that you are seeing on your screens is from Hyderabad, where Prime Minister will be dedicating to the nation the Statue of Equality in a short while from now. द्वादशेष्टि सहित अष्टाक्षरी मंत्रकोरि हवन पूर्वक पंचत्रिंशदुत्तर सहस्रकुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायागर्मणि यद्यत्प्रतिगतसायंकाले साजमज्ञाराधना परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम सकल देवता तृप्त्यर्थम पूर्णाहुति होमं करिष्ये इति संकल्प्य ओम अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देव सविधा प्रसुभा पूर्णाहुति द्रव्यमभ्यर्थयेत्। जय श्रीमन्नारायण యాగశాలలో హోదాలంతా ఎక్కడి వారు అక్కడే కూర్చోవలసిందిగా సూచన చేస్తున్నా. ఋత్వికులు కూడా మీ మీ స్థానాలలో కూర్చొని ఉండవలసిందిగా సూచన. జై శ్రీమన్నారాయణ.
जय श्रीमन्नारायण। जय जय प्रतिमा के श्रीमन्नारायण। अनावरण के लिए पहुंचेंगे। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचा भद्रवेदी है। और All right, so live visuals are coming in from Hyderabad, where Prime Minister Narendra Modi, in a short while from now, will be dedicating to the nation the 216 feet high Statue of Equality that has been constructed in the memory of the 11th century saint Sri Ramanujacharya of the Bhakti movement. Meghna, you know, we were talking about what really Sri Ramanujacharya stands for and how his values, his principles, his teachings still hold true in today's world. Now, you know, connecting with the younger generation, there is, of course, a 3D presentation. There are also digital archives which have been placed there to connect with the younger generation. Help us understand more on that, and of course, what the Prime Minister will be doing right now. Where is he right now? Yes, this is the base of the statue, Shreya. This is the beautiful base of the statue. Now we can see there are elephants at the base of the statue, and above that are lotus petals, about 54 lotus petals on which the statue rests. There are also shankhas and chakras surrounding the statue. The statue of Ramanujacharya Swami is 108 feet. Beneath it is 54 feet Bhadravedi, and then there are these elephants. All above them are these lotus petals, and there is the Tridandi, which is about 135 feet. So this beautiful statue, especially when we're just showing, you know, the visuals from the lenses of our cameramen, beautiful visuals, especially in the evening, look extremely divine. If I could explain it to you in words, it's miraculous. Beautiful evening, as well as these lights make it even more look. Modi currently going around the statue, kind of a parikrama, if we could say. He has been going around the statue, you know, understanding about its build, that how it has been built. Also, when we talk about this beautiful statue, it is made of Panchaloha. For the benefit of our viewers, I'd like to you know, repeat that this is the 216 feet tall statue of equality, which commemorates the 11th century Bhakti saint Sri Ramanujacharya, who did promote the idea of equality in all aspects. This statue, made of Panchaloha, combination of 5 metals, gold, silver, copper, brass and zinc, is among the tallest metallic statues in sitting position in the world. This is a very beautiful statue which is there, and currently Prime Minister Narendra Modi is worshipping the gold deity, which is just beneath the statue, and he is currently performing a puja there of the gold deity. He is performing a puja at the statue of equality, and after this Prime Minister Narendra Modi is expected to be speaking and to be delivering an address. The beautiful breeze and the lights is definitely increasing. All right, Meghna, will go across. We will let our viewers listen Indra
तस्मै देवाधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च भारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय रामानुजा जय रामानुजा जय रामानुजा जय रामानुजा जय रामानुजा जय रामानुजा। यह कार्यांजलि है और साथ ही साथ समता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आजीवन Statue of Equality in memory of the 11th century saint Sri Ramanujacharya of the Bhakti movement. Sri Ramanujacharya promoted the idea of equality in all aspects of life, including faith, caste and creed. Now, he was revered as a Vedic philosopher and a social reformer. He traveled across India advocating equality and social justice. Sri Ramanujacharya is also considered to be the reviver of the Bhakti movement, and his preachings have inspired other Bhakti schools of thought. He is considered to be the inspiration for poets like Annamacharya, Bhakta Ramdas, Tyagaraj, Kabir, as well as Mirabai. He is also famous as the chief proponent of the Vishishta Dvaita sub-school of Vedanta, the Vedanta philosophy that originated in India. Now, on your screen, you can see Prime Minister Narendra Modi, and of course, at the podium, you can see the person who conceptualized this दिवस है। अपने विश्व को समता का संदेश 1000 साल पहले जो महानुभाव रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज दिए थे, उनकी श्री मूर्ति, इसको समता मूर्ति कहते हैं, और उसी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम करने के लिए मान्य महोदय अपना पवित्र भारत देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारे हैं। श्री रामायण में वाल्मीकि भगवान कहते हैं, तमेवं व्रत संपन्नम। रामचंद्र भगवान को व्रत संपन्न कहते हैं, और लोकनाथोपमं नाथम मेदिनी अकामयता। श्री रामचंद्र भगवान राजा होना है ऐसा लोगों ने नहीं चाहा, ये धरती मां चाह रही थी।
वाल्मीकि भगवान कहते हैं व्रत संपन्न है ये रामचंद्र और अप्रदृश्य वैभव रहने वाला है। लोकनाथा उपमम, सारा जगत को पालन करने का शक्ति रहने वाला है, ये समझकर मां, ये भूमि, ये धरती रामचंद्र भगवान को ये मेरा पालक होना है ऐसा चाहती थी। यहां पर अभी पधार कर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री मूर्ति का अनावरण किए हैं अपना प्रधानमंत्री जी, वैसे ही गुणों से परिपूर्ण हैं। ये भी व्रत संपन्न है। हमने सुना और देखा, जब अमेरिका गए थे दशहरा का समय में, वहां पर अपना व्रत नियम के अनुसार 10 दिन भी केवल जलपान करते ही अपना समय को वहां पर दिए थे। यानी धर्म का पालन करने में और अपना वैदिक नियमों को पालन करने में ये कटिबद्ध होते हैं। यहां पर जब आए, वैदिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो वैदिक स्वरूप से रहना है उसको वो प्रेम से स्वीकार किए हैं। ये भी उनका व्रत निष्ठा को दिखाती है। और श्री रामचंद्र भगवान अप्रदृश्य वैभव रहने वाला है, यानी पराक्रम से जो जो काम करना है उसको अवश्य ही करके दिखा सकेंगे। हमारे प्रीतम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी भी अप्रदृश्य है। पराक्रम से देश को अपनी दुनिया में सबसे आगे और सबसे ऊंचाई में रखने के लिए कटिबद्ध होकर अपनी सेना को महत्व और सार्वभौमत्व दिए हैं। देश में रहने वाले गर्व से मैं भारत हूं, मैं हिंदू हूं, ऐसा अपने दिल में हाथ रखकर कहने का ताकत ये आने के बाद ही हुआ है। गर्व से अब सिर उठाकर हम रह सकते हैं। न केवल हम, मां भारती भी इनका आगमन के बाद ही काश्मीर रूप अपने सिर को उठाकर मुस्कुराते दर्शन दे रही है। ये इनका अप्रदृश्य शक्ति को दिखाता है। संसार में अपने देश में रहने वाले हर प्रकार की जनता, चाहे वो कोई भी हो, वो सब मिलकर सबके साथ और सबका विकास की नारा से ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा रामचंद्र भगवान सबको एक कुटुंब बनाकर अपना स्थान को इतिहास में शाश्वत रखे हैं। श्रीमान माननीय मोदी जी भी वैसे ही गुणों से पूर्ण रहते हुए अपना भारत का महत्व को दुनिया में सिर झुकाकर, सिर उठाकर रहने के लिए जो भी करना है वो सब करके दिखा रहे हैं। और उनके अलावा कौन इसी समता मूर्ति को अनावरण करने के लिए अधिकारी बनते हैं? वे प्यार से यहां तक प्रयास करके आकर आज
भगवत रामानंद स्वामी जी की समता मूर्ति का अनावरण किए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। श्री रामानंद स्वामी जी महाराज का एक स्टैंप वो लोकार्पण करने के समय में श्रीमान मोदी जी 40 मिनट तक रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की समता स्फूर्ति के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को वो बताए थे। और ऐसा महान विभूति के अलावा श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की इसी समता मूर्ति का अनावरण करने के लिए अधिकारी कौन बनते हैं, वे यहाँ पधार कर अभी इस कार्यक्रम करके अपना देश का महत्व को बढ़ाएं, जिसके लिए हम उनके स्वागत समर्पण करते हुए इस सु अवसर पर यहाँ पर पधारे सो हमारे केंद्र मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी को आह्वान करेंगे। इस सु अवसर पर 2 शब्द आप इस स्वागत समर्पण के रूप में अर्पण करें। श्रीमान किशन रेड्डी जी। श्री 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 त्रिदंडी చిన్నజీయర్ స్వామీజీ పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో రామానుజ స్వామి యొక్క విగ్రహ ఆవిష్కరణకు వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ మాననీయ नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र गवर्नर श्रीमती तमिलसाई गारू, पेद्दलु राजेश्वरराव गारू, इंतंत अद्भुतंगा ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో పాల్గొంటున్నటువంటి గౌరవ పెద్దలు, అతిథులు, స్వాములు, పూజారులు, మిగతా కార్యకర్తలు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। సర్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వానికి భారతీయ సంస్కృతిలో అనాదిగా వస్తున్నటువంటి మరి ఈ యొక్క ప్రధాన లక్షణము ఈ మధ్య మరి కొంతమంది అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క సమాజాన్ని విభజించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం। సుమారు 1000 సంవత్సరాల క్రితం జన్మించినటువంటి శ్రీ శ్రీ రామానుజ స్వామి గారు ఆ రోజే మనకు సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే, భక్తులందరూ కూడా ఒకటే, వాళ్ళలో ఏ రకమైనటువంటి తారతమ్యం ఉండడానికి వీలు లేదు అనే విషయాన్ని దైవం ముందు అందరూ సమానులే, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని ఆ రోజు రామానుజ స్వామి గారు చెప్పారు। ఇప్పుడు కూడా అది పూర్తిగా మనకు వర్తిస్తుంది। ఈ 1000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి సందేశము మన సమాజానికి ఉపయోగపడతా ఉంది। మనకందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఆయన స్ఫూర్తితో, రామానుజ స్వామి స్ఫూర్తితో మనం అందరం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈరోజు శ్రీ 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 చిన్నజీయర్ స్వామి గారు గత 7-8 సంవత్సరాలుగా ఒక యజ్ఞం లాగా, ఒక తపస్సు లాగా అహోరాత్రులు శ్రమించి అనేక మంది భక్తులను ఏకం చేసి ఈ యొక్క గొప్ప కళాఖండాన్ని, ఒక పవిత్ర స్థానాన్ని, ఈరోజు ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని ఈరోజు మన ప్రపంచానికి అందించారు, హిందూ సమాజానికి అందించారు। ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఎంతో సంతోషపడతా ఉన్నారు ఈ యొక్క దివ్యక్షేత్రాన్ని చూసి, ఈ పవిత్ర స్థానాన్ని చూసి, ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని చూసి। మనకందరికీ తెలుసు, ఒక చిన్న దేవాలయం నిర్మించాలంటే ఎంత కష్టం అవుతుందో, కానీ స్వామీజీ గారు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో, రామానుజ స్వామి గారి ఆశీస్సులతో, పెద్దలు రామేశ్వరరావు గారి సహకారంతో, మిగతా వాళ్ళ కమిటీ మెంబర్ల సహకారంతో అద్భుతంగా ఎంతో శ్రమించి ఈ కళాఖండాన్ని, ఈ యొక్క దివ్యక్షేత్రాన్ని, ఈ పవిత్ర స్థానాన్ని నిర్మించారు।
అటువంటి ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం కోసం ఇంతకుముందు స్వామీజీ చెప్పారు, నరేంద్ర మోడీ గారు తప్ప ఇంకెవరు అవుతారు అర్హులు అని. వాస్తవమే, నరేంద్ర మోడీ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. నరేంద్ర మోడీ గారు తన జీవితంలో అనేక రకాల కష్ట సుఖాలను ఎదుర్కొన్నారు. అనేక రకాల ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సమాజంలో మార్పు రావాలని కోరుకున్నారు. మీకు తెలుసు, ఇటీవల అలహాబాద్లో మరి మనకందరికీ తెలుసు గొప్ప కుంభమేళా జరిగింది. ఆ కుంభమేళాలో లక్షలాది మంది ప్రజలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందువులు, సాధువులు, సంతులు అనేక మంది పాల్గొన్నారు. ఆ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ కార్యక్రమం చివరన వెళ్ళి ముందు దేవుణ్ణి పూజిస్తూ, గంగమ్మను పూజిస్తూ, తర్వాత వారు పూజించారు. అక్కడ పారిశుద్ధ కార్మికులకు పాదపూజ చేశారు. ఆ రకంగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు సమానంగా ఉండాలి, అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని ఈరోజు రామానుజ స్వామి యొక్క అడుగుజాడల్లో, వారి స్ఫూర్తితో, వారి స్పిరిట్తో, వారు చూపించినటువంటి బాటలో ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు. అంతేకాదు, ఇటీవల కాశీలో మనం అందరం చూసాం ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని. మరి అక్కడ దివ్యకాశి, భవ్యకాశి అన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా చాలా తక్కువ సమయంలో ఆ దేవాలయ నిర్మాణం చేసినటువంటి కార్మికులందరినీ కలిసి వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేశారు నరేంద్ర మోడీ గారు. అంటే ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, రామానుజ స్వామి గారు ఏదైతే చెప్పారో ఆ రోజు, ఈరోజు మనందరం కూడా దాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే స్ఫూర్తితో నరేంద్ర మోడీ గారు గత 7 సంవత్సరాలుగా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు. పేద ప్రజలందరికీ ఈరోజు టాయిలెట్లు నిర్మాణం చేయాలి, పేద ప్రజలందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇవ్వాలి. పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇటీవల కరోనా వచ్చినప్పుడు 2,60,000 కోట్ల రూపాయలతో పేద ప్రజలందరికీ అన్నం పెట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున. అది ఈరోజు మనకు ఇవన్నీ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారంటే రామానుజ స్వామి చూపించినటువంటి బాట, వారు ఇచ్చినటువంటి సందేశము మనం ఈరోజు అమలు చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు మరి చిన్నజీయర స్వామి గారు అనేకమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, విద్యా సంస్థలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, దేవాలయాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, గిరిజన ప్రాంతాలలో, షెడ్యూల్ కాస్ట్ బస్తీలలో, బడుగు బలైన వర్గాల బస్తీలోకి వెళ్ళి అందరినీ సమానత్వం కోసం, అందరినీ ఐక్యం చేయడం కోసం కృషి చేసినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు. నిజంగా మనకందరికీ ఈరోజు చిన్నజీయర స్వామి గారు మనకందరికీ ఇంత భవ్య మందిర నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించి వారి యొక్క మరి ఆలోచన విధానంతో ఈ క్షేత్రాన్ని మనకు అందించడము నిజంగా మనందరము సంతోషపడాల్సిన అవసరము. నేను ప్రత్యేకంగా మనకు తెలుసు స్టాచ్యూ ఆఫ్ మరి యూనిటీ నరేంద్ర మోడీ గారు అహ్మదాబాద్లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించారు. ఈరోజు స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ మరి ఇక్కడ మన చిన్నజీయర స్వామి గారు ప్రతిష్ఠించారు. మన హైదరాబాద్కు సర్దార్ పటేల్ ఎంత ముఖ్యమో మనకు తెలుసు. మన స్వాతంత్రం రావడం కోసం, 3 రంగుల జెండా ఎగరడం కోసం సర్దార్ పటేల్ ఆ రోజు 1 సంవత్సరం ఆలస్యంగా మన స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో మనకు సర్దార్ పటేల్ సహకరించారు. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా సమానంగా ఉండాలి, దేవుడు ముందు అందరూ సమానులే అనేటువంటి భావనతో ఈరోజు ఈ యొక్క రామానుజ స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ పేరుతో ఈరోజు చిన్నజీయర స్వామి గారి యొక్క ఆశీస్సులతో నరేంద్ర మోడీ గారు పూజా కార్యక్రమంతో ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ హైదరాబాద్ నగరం రానున్న రోజుల్లో ప్రపంచ చిత్రపటంలో మరి ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి పర్యాటక రంగంలో ఒక కేంద్రంగా ఇది నిలవబోతా ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా నేను మరొకసారి స్వామీజీ పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ దీన్ని సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ దేశ ప్రజలు, హిందువులు తప్పకుండా ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాన్ని, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటారు, ఈ యొక్క రామానుజ స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతారు. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ రకంగానైతే కాశీ వెళ్ళాలో, ఏ రకంగానైతే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలో, అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ దివ్యక్షేత్రాన్ని, ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుంటారు. ఆ దిశలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాలుగా దేశంలో, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులు రావడం కోసం అన్ని రకాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. స్వామి వారి ఆశీస్సులతో ముందుకు తీసుకెళ్తామని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి స్వామివారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ.
जय श्रीमान नारायण श्रीमान किशन रेड्डी साहब, अपना राष्ट्र का प्रथम महिला गवर्नर श्रीमती तमिलिसाई जी यहाँ इस कार्यक्रम का सहभागी बनकर अपने साथ यहाँ पर विराज रहे हैं। उनको भी हम स्वागत समर्पण करते हुए हमारे प्रीतम प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे इस समता मूर्ति का अनावरण सु अवसर पर वे समाज को और दुनिया को संबोधित करें और प्रेरणा दें। प्रीतम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ओम असमत् गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई जी, पूज्य श्री जीयर स्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी, भागवत विभूतियों से संपन्न सभी पूज्य संतगण, देवी और सज्जनों, आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात हमारे गुरु की मूर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है। अब प्रकट को प्रकट करने की ये प्रेरणा, सूक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प, यही भारत की परंपरा रही है। हमने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार दिया है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखा सके। आज एक बार फिर जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है।
मुझे विश्वास है ये प्रतिभा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं 108 दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। आरवार संतों ने जिन 108 दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में भ्रमण करके किया था, कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे आज श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से यही मिल गया। मानवता के कल्याण का जो यज्ञ उन्होंने 11वीं शताब्दी में शुरू किया था, वही संकल्प यहां 12 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठानों में दोहराया जा रहा है। पूज्य श्री जीयर स्वामी जी के स्नेह से आज विश्वक सेन इष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं इसके लिए पूज्य जीयर स्वामी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक सेन इष्टि यज्ञ संकल्पों और लक्ष्यों की पूर्ति का यज्ञ है। मैं इस यज्ञ के संकल्प को देश के अमृत संकल्पों की सिद्धि के लिए नतमस्तक होकर के समर्पित करता हूं। इस यज्ञ का फल मैं अपने 130 करोड़ देशवासियों के सपनों की पूर्ति के लिए अर्पित करता हूं। साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा। स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने
संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो। साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव कल्पना के बाहर कितना ज्यादा होगा, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव, अर्थात संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, हमारी संस्कृति की विशेषता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाज के भीतर से ही लोग निकलते हैं। युगों से देखते आइए, समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैलने लगते हैं, कोई न कोई महापुरुष हमारी बीच में से पैदा होता है। और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशा उनके कालखंड में शायद स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, चुनौतियां रही हो या न रही हो, संकट झेलने पड़े हो या न पड़े हो, विरोध भी सहना पड़ा हो, लेकिन उस विचार में, उस तत्व में उतनी ताकत रहती थी, उनका कन्विक्शन इतना जबरदस्त होता था कि वो समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है
तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्वीकृति भी उतनी तेजी से मिलती है, सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि बुराइयों के पक्ष में, कुरीतियों के पक्ष में, अंधविश्वास के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्शन नहीं होता है। जो बुराई से लड़ते हैं, जो समाज को सुधारते हैं, हमारे यहां उन्हें ही मान और सम्मान मिलता है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग रामानुजाचार्य जी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित हैं। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावहारिक जीवन का भी। जाति के नाम पर जिनके साथ भेदभाव होता था, रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकलथार, यानी लक्ष्मी जी के कुल में जन्म लेने वाला श्रीकुल या देवीय जन। वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखकर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी छुआछूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब आंबेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो। सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजनाएं चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाभ हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को हो रहा है। चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बिजली का मुफ्त कनेक्शन, चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो। ऐसी योजनाओं ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित सभी का भला किया है। बिना भेदभाव सबको सशक्त किया है। साथियों, रामानुजाचार्य जी कहते थे, उरिये गल्लुकुल बेड़ मिल्ले, अर्थात सभी जीव समान है। वो ब्रह्म और जीव की एकता की बात ही करके रुकते थे, ऐसा नहीं थे। वो वेदांत के इस सूत्र को स्वयं भी जीते थे। उनके लिए स्वयं में और दूसरों में कोई भेद नहीं था। यहां तक कि उन्हें अपने कल्याण से ज्यादा जीव के कल्याण की चिंता थी। उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बाद जब उन्हें ज्ञान दिया
तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा, क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था। उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, जीवन समर्पित किया था और इसलिए ये गुरु मंत्र मिला था। लेकिन रामानुजाचार्य जी की सोच अलग थी। रामानुजाचार्य जी ने कहा, पति से एक एवाहम, पति से एक एवाहम, न के गुरु पातकात् सर्वे गच्छन्तु भवताम कृपया परमम पदम। यानी मैं अकेला नरक जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबका कल्याण होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया, हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उन्हें उनके कल्याण के लिए दिया था। समानता का ऐसा अमृत रामानुजाचार्य जी जैसा कोई महापुरुष ही निकाल सकता था, जिसने वेद वेदांत का वास्तविक दर्शन किया हो। साथियों, रामानुजाचार्य जी भारत की एकता, भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेरणा है। उनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत पर है। अन्नामाचार्य जी ने तेलुगु में उनकी प्रशंसा की है। कनकदास जी ने कन्नड़ भाषा में रामानुजाचार्य जी की महिमा गाई है। गुजरात और राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचार्य जी के विचारों की सुगंध में महसूस होती है। और उत्तर में रामानंदीय परंपरा के गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर कबीरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचार्य परम गुरु है। एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो देता है, रामानुजाचार्य जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं। इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में भारत की चेतना को जागृत रखा था। साथियों, यह भी एक सुखद संयोग है, श्री रामानुजाचार्य जी पर यह समारोह उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं। आज देश अपने स्वाधीनता सेनानियों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने इतिहास से हम अपने भविष्य के लिए प्रेरणा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। इसलिए अमृत महोत्सव का यह आयोजन आजादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं। हम जानते हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई पर नहीं था। इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैश्विक मानसिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीने दो का विचार था। इसमें एक और ये नस्लीय श्रेष्ठता और भौतिकवाद का उन्माद था, तो दूसरी ओर मानवता और अध्यात्म में आस्था थी। और इस लड़ाई में भारत विजयी हुआ, भारत की परंपरा विजयी हुई। भारत के स्वाधीनता संग्राम में समानता, मानवता और अध्यात्म की वो ऊर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचार्य जी जैसे संतों से मिली थी।
क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वाधीनता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं? और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये धुन हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, वही ऊर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। वैसे किशन रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में बड़ा विस्तार से उसके लिए कहा। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चिर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती। हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वजवाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति यह समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा प्रत्येक देशवासी को निरंतर प्रेरित करेगी। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत काल में हम उन कुरीतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिन्हें खत्म करने के लिए
श्री रामानुजाचार्य जी ने समाज को जागृत किया था। इसी भाव के साथ पूज्य स्वामी जी का आदर पूर्वक धन्यवाद करते हुए इस पवित्र अवसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। विश्व भर में फैले हुए प्रभु रामानुजाचार्य जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। माननीय प्रधानमंत्री महोदय रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणा और उनका संदेश जगत को कैसा आगे बढ़ने के लिए और विश्व मानव सौभ्रातृत्व के लिए किस प्रकार रास्ता खुले हैं, इसके बारे में आपका ये संदेश बहुत ही प्रेरणात्मक है और सबको मार्गदर्शक भी है, जिसके लिए हम ये सहस्राब्दी महोत्सव समिति के द्वारा बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम सब चाहते हैं जैसे आप अपना धर्म का और भारत का गौरव को विश्वव्याप्त किए थे और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, वैसे ही इस समता संदेश दुनिया को प्रभावित करें। इसी प्रार्थना से हम हमारा इस कार्यक्रम का मूल स्रोत श्रीमान डॉक्टर जे रामेश्वर राव जी, जो न केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक धर्म पालन करने वाला एक वैदिक प्रेमी भी है और सच्चा मार्ग को स्वीकार करते हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का मार्ग पर चलने वाला एक अच्छा भक्त भी है। हम डॉक्टर रामेश्वर राव साहब को आह्वान करेंगे कि अब इस सुअवसर पर अमृत महोत्सव के नाम से भारत का आजादी के लिए जो लड़े थे, जो जान दिए थे, जो अपने खून बहाए थे, ऐसे व्यक्तियों का महत्व को दुनिया को बताने के लिए एक अमृत महोत्सव नाम से एक उत्तम कार्यक्रम अपने देश को दिए थे और दे रहे हैं। ऐसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करें, कृतज्ञता प्रकट करें। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। On behalf of Lord Ramanujacharya Sahasrabdi Committee, I take this opportunity to thank our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Sri Tridandi Narayana Ramaji Chinnaji Swami ji and Honorable Governor of Telangana Dr. Tamilisai Soundarajan ji and Honorable Union Minister Sri G. Kishan Reddy Garu for blessing this divine event. Lord Ramanujacharya strived hard throughout his life against all modes of bringing up the spirit of equality among the humankind. And his philosophy and way of life is the best way forward for the society today. It is a great
fit and a fitting tribute to establish the statue of Lord Ramanujacharya. I am blessed to get an opportunity to participate in this great work as one of the firm believers of Lord Ramanujacharya. With the inauguration of the statue of Lord Ramanujacharya and dedication of Sri Sahasrabdi project to the nation by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji today, the spiritual path shown by Lord Ramanujacharya will spread throughout the world. I once again thank you, our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji and all other dignitaries for their valuable participation. And I also thank support of the state government and central government and media and everybody, all the participants. Thank you one and all. Jai Sriman Narayan. क्लोज चलना क्लोज गुड बाय किसरा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है ये म्यूजिकल फाउंटेन के साथ रामानुजाचार्य जी के जीवन को प्रदर्शित करने वाले
कथाओं Prime Minister Narendra Modi in Hyderabad dedicating to the nation the Statue of Equality. Just a short while back, the 216 feet high Statue of Equality has been constructed in memory of 11th century Saint Sri Ramanujacharya of the Bhakti Marg. The Prime Minister dedicating to the nation the beautiful statue of the 11th century saint. This evening, there you see on your screens there the 216 feet high Statue of Equality. The inauguration of the Statue of Equality is part of the 12-day Sri Ramanuj Sahasrabdi Samaroha, the ongoing 1000th birth anniversary celebrations of Sri Ramanujacharya. The Prime Minister in his speech a short while back lauded and recalled the incredible and immense contributions of the 11th century Saint Ramanujacharya to Indian traditions and culture. Even today, he says, when we talk of progressiveness, we realize when we look at the life and the work of Ramanujacharya that there is no difference between the past and the present, between ancient teachings and traditions and modernity. He said we can move forward only if we connect to the past, and that we should all connect to our roots if we want to move forward. Speaking of the 11th century Saint Ramanujacharya, whose 216-foot statue the Prime Minister inaugurated this evening, he said that Ramanujacharya broke all barriers of caste and creed. He embraced all, irrespective of caste or creed or religion, and esteemed all. He spoke of how Ramanujacharya taught that the qualities of a person created value in life and in the world, and not caste or creed. The Prime Minister said that reform is carried out by individuals who emerge from within our society. Those are live visuals we are getting you from Hyderabad. And the Prime Minister and other dignitaries there, all set to witness the light and sound show depicting the life and work of the 11th century Saint Sri Ramanujacharya, whose 216-foot statue you see there. And which the Prime Minister inaugurated this evening. Well, those are live visuals we're getting you there from Hyderabad, where the Prime Minister a short while back inaugurated the 216-foot high statue of 11th century Saint Sri Ramanujacharya. The statue has been called the Statue of Equality. The 11th century saint, known for having embraced all, irrespective of caste, creed and religion. His message of equality in all of his work, his life and teachings.
The Prime Minister in his speech spoke of the immense contribution of Sri Ramanujacharya. Meghna, our correspondent, joins us. Meghna, an incredible statue unveiled and inaugurated by the Prime Minister this evening. It's 216 feet tall and looks brilliant in the evening, bathed as it is in different colored lights. Meghna, if you can hear me. चोल वंश के राजाओं ने ऐसा कुछ कर दिखलाया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण धर्म पताका फहराया। दूर विदेशों के वासी भी वैदिक धर्म अपनाते थे। अपनी ही इच्छा से वे वैष्णव जन बन जाते थे। धर्म, कला और संस्कृति की जीवित अभी कहानी है। सात समंदर पार अभी तक उनकी अमिट निशानी है। इसी युग में श्री रामानुज का श्री पेरुम्बदूर में जन्म हुआ। माँ कांतिमती और पिता केशव यज्वी के घर में। गुरु तिरुमल नंबी ने पहली ही दृष्टि में उसे पहचान लिया। रामानुज को आदिशेष का रूप बताया। बाल अवस्था में ही धारण वेदों का सब सार किया। श्री गुरु तिरुमल नंबी ने रामायण का ज्ञान दिया। श्री राम नाम रमे रमे मनोरमे सर्व ज्ञान संपूर्ण होने पर भी श्री रामानुज 5 गुरुओं के शिष्य बने। स्वामी गोष्ठीपूर्ण उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। भगवद गीता के चरम श्लोक और अष्टाक्षरी महामंत्र के रहस्यों का ज्ञान था। श्री रामानुज उनके शिष्य बनना चाहते थे। मंत्र की शिक्षा ऐसे ही नहीं मिलती। पहले अपनी क्षमता सिद्ध करो। 17 बार गुरु ने मना किया, पर रामानुज निराश या क्रोधित नहीं हुए। हर बार उसी निष्ठा से तपस्या के साथ 100 कोश चलकर श्रीरंगम से
गोष्ठीपुरम तक गुरु के पास आए। आखिर 18वीं बार गुरु मान गए। ज्ञान की इतनी अद्भुत प्यास, इतनी नम्रता और सहनशीलता। आज से तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें गुप्त अष्टाक्षरी मंत्र सिखाने का समय आ गया है। इसे ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम शिष्यों में होती है। कैसा मंत्र ये है गुरुवर? मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। रामानुज चढ़ गए मंदिर के शिखर पर। हर जिज्ञासु के लिए मंत्र की घोषणा की। अब मंत्र हो गया सार्वजनिक। हर शोषित पीड़ित वैष्णव जन के कानों तक पहुंच गया। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी आज्ञा को तोड़ा, इतना बड़ा पाप किया तुमने। अपने साथ मुझे भी नरक की आग में खींच गया। फिर रामानुज बोले, मंत्र को गुप्त न रखने का निर्णय सिर्फ मेरा था। इसका पूरा दायित्व सिर्फ मेरा है। अगर मैंने पाप किया है तो नरक की आग मुझे स्वीकार करे। मेरे बलिदान से सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, तो यही मेरा सही है। अगर मेरे इस काम से पुण्य का लाभ है तो वे सिर्फ आचार्य आपको है। आपकी ही पादुकाओं को सामने रखकर मैंने इस मंत्र की घोषणा की थी। पाप का दायित्व खुद ले लिया और पुण्य का लाभ मुझे प्रदान किया। तुम्हारे जैसे शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया रामानुजा। गुरु ने निश्चय कर लिया कि उनकी आगे की सभी पीढ़ियां रामानुज की शिष्य बनेंगी। सारा विश्व है तन उनका यही प्रेम का संदेश दिया। नारायण के दर्शन को द्वार हृदय का खोल दिया। शोषित और दलित को भी प्रभु सेवा का मान दिया। मंदिरों के द्वार खोले, समता का संदेश दिया। महिलाओं को मान दिया। पुरुष समान स्वामी ने मध्यकाल की दुर्नीति से अबलाओं को मुक्त किया। नित्याय परमात्मने सदैव रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्वितम्। 7 पहाड़ी छेड़कर पहुंचे मिलने को नारायण से। रामानुज ने शीश झुकाया, धन्य हो गए दर्शन से। रामानुज के सिद्धांतों पर धर्म प्रबंधन होता है। इनकी पूजा विधि नियमन का अब भी पालन होता है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर तय किया कि भगवान की दाईं हाथ में चक्र होगा और बाईं ओर शंख, भुजों पर नागाभरणम, छाती पर व्यूहलक्ष्मी आभूषण होगा। हर शुक्रवार अभिषेक होगा। हफ्ते के 3 दिन मोहिनी अलंकार किया जाएगा। आनंद विमान पे सोने का कवच चढ़ाया जाएगा। त्रिचानूर में होने वाला ब्रह्मोत्सव तिरुमला पहाड़ में होगा। भक्तजन गोविंदा गोविंदा कहकर
भगवान को आवाज देंगे, बोल गोविंदा गोविंदा। रामानुज ने तिरुमला को कलयुग का वैकुंठ बना दिया। यूं ही आए नहीं हो तुम, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। यह मंत्र अभी तुम दोहराओ, पावन अवसर आया है। ओम नमो नारायणाय। मंत्र ब्रह्म जपोगे तुम तो विघ्न सभी हट जाएंगे। नारायण की कृपा से अब काम सभी बन जाएंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 दिव्य देश है सारे जगत के, विद्यमान यह चारों ओर। स्फूर्ति बने ये रामानुज की, भई समता की भोर। मांग है यही अब समता की, हम रामानुज से पाएंगे। भर के मन के हर कोने में इसकी ज्योत जगाएंगे, इसका नाम सुनाएंगे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ऊंचाई से रामानुज की मूर्ति देती एक प्रेरणा। समता का यह संदेश लेकर सारे जगत को अपना लें। सबका सहयोग लेते चलें, आसमान तक बढ़ जाए। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। उसको बोलो ऑडियो बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम
Joining us now is our correspondent Meghna Dev, who's covering this incredible event, the Prime Minister dedicating to the nation the Statue of Equality, depicting 11th century Saint Sri Ramanujacharya of the Bhakti Marg. And the Prime Minister also lauded Ramanujacharya's immense contributions towards spreading the message of equality of all, irrespective of caste, creed or religion. Meghna, truly an incredible experience, that light and sound show spreading the message, highlighting the message of Sri Ramanujacharya. Absolutely, Rukma. You know, one of very breathtaking events that one witnesses, very miraculously majestic. This 216 feet tall statue is looking very magnificently in the lights that, the light arrangement that has been done here. And especially when we talk about Prime Minister Narendra Modi, currently he was speaking to a number of people who have been waiting since the evening. He is accepting the greetings from people who have, and especially the followers who have been there since evening, waiting for him, waiting for a glimpse of him, and who were very eager to, actually see the unveiling of the statue, witness the very beautiful light and sound show that just happened, which depicted the teachings as well as the life journey of Ramanujacharya Swamiji. And after this, Prime Minister Narendra Modi will be heading for the Yagyashala, from where he started a journey here at Sri Ramnagar. And the first program that Prime Minister Narendra Modi had was here at the Yagyashala. After that, he came to the Statue of Equality, this place where the statue was to be unveiled. He unveiled the statue, and then obviously his address that everybody listened to, and this beautiful light and sound show. Now back again, he will be going to the Yagyashala for a program, because he's going to do a puja there as well. And Prime Minister Narendra Modi very befittingly comparing, the Statue of Unity as well as the Statue of Equality. The statue which stands for unity, the strength of the country, and this is the statue which stands for equality, irrespective of all caste, creed, and religion. And this is what, this gives out a message of equality. And this is what Prime Minister Narendra Modi said, that this is what the speciality, the significance of our country is, the very USP of our country is that we have unity and equality, and these statues are actually depicting these very important characteristics which are the need of the hour. Besides that, also Prime Minister Narendra Modi, he said a number of things about Swami Ramanujacharya, that he was an inspiration for the unity and for the unity and diversity that our country has. Though Ramanujacharya Swami was born in the south, but he inspired people across the globe. He inspired everybody across the globe, and his teachings are relevant even till today. Ramanujacharya Swami traveled extensively across India, reviving and reforming temples, establishing time-tested Vedic practices. And Prime Minister Narendra Modi also took a walk around the 108 Divya Deshams that have been built here, which depict, all the people who cannot go to, the 108 Divya Deshams scattered across the country. They can come here and have a glimpse of them and worship here as well. And we saw the visuals in which Prime Minister was wearing a headphone, which was an audio guide to all, these Deshams that he was with. पिरोने का कार्य भी रामानुजाचार्य जी ने किया। 1000 वर्ष पहले उनकी दी गई दीक्षाएं और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी तब तक जब तक कि विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता। और इसी संकल्प की सिद्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहरनिश लगे हुए हैं। धर्मपरायण स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले आज एक्रिसेट में जाकर उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के प्रणेता के रूप में वहां एक
उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। అదిగో శ్రీరామానుజ ఘన గుణ గణ జయధ్వజం వినరో ప్రతి గుండె సడిగార పరమానుక్షణం జై జై రామానుజ జై 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 జయ హో రామానుజ జై 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 రామానుజ జై 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 జయ హో రామానుజ జై 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 రామానుజ భగవంతుని మొగసాలను జగమంతా ఒకటేనని అంతటి రంగని చేర్చగా అంతరంగమే చాలని ఓ భగవంతుని మొగసాలను జగమంతా ఒకటేనని అంతటి రంగని చేర్చగా అంతరంగమే చాలని మందిలోని హృదయ మందిరం తెరిచే మంత్రము నియతి రాజై నుతులందిన ఆచార్యుని అవతరణం మందిలోని హృదయ మందిరం తెరిచే మంత్రము రాజై నుతులందిన ఆచార్యుని అవతరణం శ్రీ వైష్ణవ సైద్ధాంతిక నిజతత్వావిష్కరణం అదిగో జై శ్రీమన్నారాయణ జై జై శ్రీమన్నారాయణ ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం పూర్వోక్తయే మంగళవిశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభదినౌ అస్య శ్రీ సీతాలక్ష్మణోత్తమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినః కృపయా శ్రీమద్వేదమార్గ ప్రతిష్టాపనాచార్యాణాం భగవేదాంత ప్రవర్తకాచార్యాణాం పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యాణాం శ్రీ 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 త్రిదండిన శ్రీమన్నారాయణ రామానుజీయ స్వామి శ్రీచరణానాం మంగళాశాసన పూర్వకమస్య యజమానో యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య కాశ్యపసగోత్రోద్భవస్య వృశ్చికరాసౌ అనురాధా నక్షత్రే జాతస్య नरेंद्र दामोदरदास मोदी नाम हे स्या सह कुटुंबानां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य वेगाभजायुरारोग्य ऐश्वर्य धर्मार्थ मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम ध्यात्मिकाधिदैविकारि भौतिकता पत्रक निवारणार्थम संकल्पित दार्शनिक द्वादशेष्टि सहित श्री भगवद् रामानुज समदा स्फूर्ति केंद्र शुभारंभ महोत्सव प्रयुक्त
अष्टोत्तरशतदिव्यदेश तत्तन्भगवन्मूर्ति प्रतिष्ठापूर्वक श्री भगवद् रामानुज स्वर्णमूर्ति प्रतिष्ठायुत श्रीमदष्टाक्षरी कोटि हवन मंत्रयुत श्री पंचत्रिंशदुत्तर सहस्रकुंडात्मक श्री लक्ष्मीनारायण महायाग कर्मणि अद्य तृतीय दिवस सायंकाले सायमाराधना परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं पूर्णाहुति होमं करिष्ये इति संकल्प्य ओम हिरण्यगर्भस्समप्रताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदे माङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम पूर्णाहुति आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः ॐ अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रका उदपर्णधृष्मर्चताम् अर्चत प्राच्च ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रबोधं यः पार्थिवानि विममेरजागुंसि यो अस्य भागदुत्तरगो विजक्रमाणस्त्रेढोरुघायो विष्णोरराडमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽस्न्यप्त्रे तो विष्णोस्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अतो देवावन्तु नो यतो विष्णुर्विजक्रमे दिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागो सुरे त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कराणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवि भजक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यभोजागृवां तस्मिन्धते विष्णोः यत्परमं पदम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्